नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है एंड वेलकम टू डिजाइन टॉक्स। हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट किए हुए हैं जो पैक्ड है एक सिस्टम से, एक सॉफ्टवेयर से एंड सम एक्सपर्ट्स जो हेल्प करता है आपको करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट्स पे जाने के लिए, जहां से आप चाहे बिजनेस गोल्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो, चाहे रिलेशनशिप गोल्स हो, चाहे लाइफ गोल्स हो, आप सब अचीव कर सकते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरा एक ड्रीम था, डायलॉग के ऊपर, है ना। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायलॉग एंड हम लोग अधिकतर बातें करते हैं, हम लोग कहते हैं वी हैव अ डायलॉग, बट डायलॉग इज समथिंग वेरी यूनिक। आई मीन उसको जिस तरह से करते हैं वो एक बहुत यूनिक तरीका होता है, बहुत एक प्रोसेस फॉलो करता है, जो मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने क्या किया। एंड जैसे पर्टिकुलरली एक किताब है जिसको कहते हैं डायलॉग, इफ यू सी दिस बुक कॉल्ड डायलॉग बाय विलियम आइजैक्स, ये मेरा ये मेरा फेवरेट बुक है। एंड इट टीच यू रियली हाउ टू डायलॉग। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते रहते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाते हैं। बट डायलॉग में ये सब नहीं होता है। डायलॉग में होता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज है, सब लोग सुन रहे हैं, है ना। डायलॉग की ये बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है ना। जब हम 1900, आज से 10-12 साल जब पहले जब मैं करता था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसमें होते थे, जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कन्वर्सेशन कैसा होता है, क्या तुम आपको अपना डायलॉग बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्किल्स जरूरत पड़ते थे, और डायलॉग से फायदा क्या होता था। पहले मैं किताब में पढ़ता था, पहले मैं थियोरिटिकली देखता था, ऐसे किताबों को देखता था, और ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ नया चीज है। हम एक आध बार एक्सपेरिमेंट भी किए थे आज से 8-10 साल पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फेल हो गए, हम सक्सीड नहीं कर पाए। बट आज के दिन क्या हुआ कि मैं अपना एक कम्युनिटी डेवलप किया हूँ जिसमें अधिकतर सेल्स के लोग होते हैं, यंग सेल्स पीपल, दे कम, दे मीट, वी डिस्कस, हैव अ इंटरेक्शन अबाउट डायलॉग, अबाउट सेल्स। तो उसका नाम हमने लिखा है वार्तालाप। वार्तालाप मतलब डायलॉग। Now we have a dialogue on several topics. Sometimes we have a dialogue on sales shift, or sometimes on vulnerabilities. Last time we had it on casual conversation. This time we had it on hard conversation. तो मैंने सोचा कि लेट्स हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन, और लेट्स हैव अ डायलॉग सेशन, रियल डायलॉग सेशन ऑन हार्ड कन्वर्सेशन। व्हाट इज हार्ड conversation in a dialogue format? So what I did is that I really thought over it, and I tried to understand what could be the possible flow of the dialogue session. So what I did is I constructed a set of very interesting, a bit of powerful questions around dialogue, and I want to show you those questions actually. That can actually serve as a benchmark. Also, one of the small benchmarks that you would use when you create a dialogue session on any topic that you want to have. So what I did is, what I'm going to do to now is I'm going to share with you a few things. What I'm going to share with you is uh, the format that I followed, and I think it'll serve you very well. It'll serve you well that in the fact that uh, आप जब आप अपना बनाएंगे तो क्वेश्चंस का रेफरेंस आप ले सकते हैं, एंड देन दैट शुड वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू। डन? दिखाएं? So let me share with you the the structure that I followed. And let me, here comes PowerPoint. Here is this one. Okay. Now, now, so the flow of dialogue sessions. कैसे dialogue sessions flow करता है? I mean, one of this is a very interesting. इस किताब में, विलियम आइजैक्स की वाली किताब में, वो ऑल्सो बताता है कि
कि जूलू ट्राइब जो है वो कैसे डायलॉग करते थे, जितने अधिकतर ट्राइब्स हैं अफ्रीका में वो लोग कैसे डायलॉग करते थे। सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आई हैव शेयर्ड एंड यू शुड एक्चुअली गो थ्रू दिस बुक एंड दे विल टेल यू समथिंग। तो हमने ने क्या किया कि हमने भी कुछ उसको उसी फॉर्मेट में बनाया, एंड देन वी आई एम जस्ट रोलिंग इट आउट फॉर यू। सो द पहला पॉइंट जो हम लोग कहते हैं कि वो है कि तुमको कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसमें पहला जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड रूल बना सकते हैं कि लिसन, जब ये सेशन होगा तो यू हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। दूसरा हमने हमने ग्राउंड रूल्स में डाला था कि डोंट टेल इट ऑफ द कफ, से इट with your experience. What does your experience tell you? So you use those experience as a word. And sometimes I tell them कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, silence is perfectly fine. You don't have to answer everything. Zulus भी यही करते थे. So when one person spoke, the others were quiet. So once the others when he finished his conversation, the other one would take over. So everyone would have a chance in dialogue. That's the very wonderful beauty. तो कभी कभी ये सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर दूसरा, फिर कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें आप देखिएगा सब लोग डायलॉग में बहुत फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज अ शक। हम क्यों दिल खोल के अपनी बातें बताएं, बताने से तो बात छिड़ निकल जाएगी, कल उसको लेके को लोग हमारे ऊपर यूज कर डालेंगे। तो कभी कभी एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और ट्रस्ट कैसे बनता है, जब आप एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं विद इन द ग्रुप। तो जैसे आप एग्रीमेंट फॉर्म कीजिए कि भाई जो बातें हो रही है वो आपस की बातें हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। या अगर हम आपसे कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज आप काटिएगा मत, डोंट लाफ एट माई आइडियाज। ये भी एक एग्रीमेंट हो सकता है, कई एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट यू नीड टू फॉर्म वन और टू एग्रीमेंट्स सो दैट यू रेस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू स्पेंड सम 4-5 मिनट्स हियर, आई वुड प्रॉब्ली से स्पेंड सम टाइम, बिकॉज जल्दी में मत रहिए कि डायलॉग शुरू कर देना है ना, इसमें रहिए, लेट इट इवॉल्व। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेट इट इवॉल्व। आप देखिएगा बड़ा, जब मैंने इसको लगाया, पहले मुझे 1 मिनट तक शांत था, लेकिन अचानक लोग बोलने लगे। आज जब वो बोल रहे थे सेफ्टी कंसर्न्स, कुछ लोग बोलने लगे कि देखो हमारे पास कभी आदत नहीं है बोलने की, आप हमसे व्यूज मांग रहे हो, हम शायद व्यूज ना दे पाए तो क्या होगा, तो बताना पड़ रहा था। एंड दैट वाज मेकिंग देम वेरी वल्नरेबल, बट दे शेयर देयर थॉट्स। आई लव दैट फैक्ट, कभी 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 आश्चर्यजनक चीज बोल देते हैं लोग। And so the third, then I started with the normal conversations. So then I asked him, Bhai, when you heard the word hard conversation, what is the situation or what is that emotion or feeling that comes in your mind? So imagine कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप हार्ड कन्वर्सेशन करें तो आपके मन में क्या पहला सेंटेंस आ रहा है? And this makes people think, you know, oh dear. Hmm. So I got some very interested. एक किसी ने कहा fear, किसी ने कहा जजमेंट, एंड आई रिमेंबर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पीपल वर सेइंग, बट दे वर सेइंग, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दे वर सेइंग। तो तुमको अब इसको जब करने के बाद ना, आपको सडनली एक यहाँ का ना इमोशनल मैप समझ में आता है। यहाँ के लोग, यहाँ जो रूम में जितने लोग बैठे हैं, उनका इमोशनल मैप क्या है, वो क्या सोच रहे हैं डायलॉग है मतलब हार्ड कन्वर्सेशन के बारे में। और ये जो इन आउटपुट आता है ना, माइंड बॉगलिंग। आप ट्रेनिंग देते रहो हार्ड कन्वर्सेशन पे, कुछ फायदा नहीं है until unless you really know what's the emotional map of the people who are sitting in the room and sharing their thoughts. Wow, that was a great idea, that the great inputs I used to get from the team. तब फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब आपने आप हमें आपका इमोशनल मैप समझ में आ गया, आप किस किस स्थिति में है। लेट्स हैव अ स्मॉल इंटरेक्शन, सो लेट्स कैन यू शेयर विथ मी अ रियल एक्सपीरियंस, क्या हुआ आपके पास, एंड व्हाई, व्हाट मेड इट हार्ड फॉर यू। और लोगों ने बात की। मुझे याद आ रहा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। सो वन ऑफ द गाइज वर एक्चुअली टेलिंग मी दैट व्हेन आई वेंट एंड आई मेट द डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और डीजीपी आस्क्ड मी वन सिंपल क्वेश्चन, लिसन, मेरे कहने से सब लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सो इफ आई से एवरीबडी वुड लाइक टू वर्क विथ मी, नाउ व्हाई शुड आई वर्क विथ यू। Oops, this fellow said, he said he was startled. He was, how do I answer this? Really hard. It came out very hard on this person. But yeah,
He said he handled it. But the fact is, very powerful question, sent a meaning. Yeah. And these kinds of what made it hard for you? So it was a very interesting point at that. The suddenness of the questions, out of nowhere it comes in. These are things that making it hard for me. I never anticipated those questions. What do you say for this? Yeah, it's so true. I mean, the reality is that how many of us, how many of us actually prepare for a dialogue session or prepare for a meeting and go? You might be prepared with the documents and all that. How well are you prepared for the meetings? And the meetings do convey a very important point. So if you are very well prepared on the meetings, then you probably will have good control over yourself. So and the third question that I asked him, what did you hear that stayed with you? So कहते कुछ form of question, some form of question, some form of snub that he said they stayed on with me. Many people have snubbed me, and that's what Benny said. And when they said that snub, so they stayed on me. Sometimes they said no to the proposal. Sometimes they said we'll check it out. Even after explaining, many have said that please explain me again. Now that stayed on me. What is it? Now that this is very interesting. What makes conversation hard for us as employees? So I asked them this question: what makes conversation hard for us? Now imagine the inputs coming in, the ability to understand, the ability to see the larger perspective, to understand the need of the customers or this communicator. Sometimes things that we have never imagined has come about and hit us hard. Why? Why? Because we saw the world from our side, but we never saw the world from their side. So we're not asking the kind of questions that we need to be asking. So कभी कभी ऐसा लगता है, you know, our conversation style, maybe our ability to research on the possible future dialogues, it's not there. What do you use when I ask this question? What do you usually avoid in hard conversation? Now, something here they were struggling to answer. They said, we do everything. When the conversation, um, but one of the things that they said, listen, when the conversation becomes hard, in very hard conversation, I usually avoid talking much, avoid sharing much. So I quieten down. So I don't talk much and I quieten down. So that is something they start avoiding, in hard conversation. याद रखिए, most of the employees who go for a deal, for them the deal is high stakes, and they say they want the deal, but they are snubbed also. They are taken for a ride also. And when this happens, sometimes the sometimes the employees avoid certain things, and in the conversation, it is hard. I did tell you it's hard sometimes. I mean, for me, whenever there has been hard conversation with potential clients, like they have said, sometimes it's been very hard. What do you usually? Sometimes it's been very hard in terms when they say, I'm not understanding what you can do for us. Now, what do you say that? And then suddenly you start avoiding. Okay, let it be. You can't, sometimes I avoid telling many things, to the potential customers. Why? Because they're not understanding things, they're not understanding. Then last amongst the penultimate question that I ask is that if hard conversation had a message for us, what would it be? So this is very, very useful, interesting. And students, participants came out with some very funny things. So if hard conversation had a message for us, yeah, one of them said, guys,
Be prepared for next time. Guys, try to understand your client before you go to meet him. Right, guys? What are you doing? You're not even taking it up properly. You're not even serious in your conversation. Strange kind of inputs being, message was being shared with us, and the messages they were feeling that kind of message, and said, "Good, you." Some of them said, one of them said, "Good, you deserved it." Yeah, matlab, meaning, I mean, you're not well prepared, so good, you did not get the deal. So one of them said that. This is how it is. I mean, end of the day, let's face the truth. Uh, And lastly, I asked this question, what am I taking away from today's dialogue? So I asked them this question. This is very interesting. So this has been the flow of the dialogue session. Now it started with building up the dialogue session, creating a trust, or trying to understand their experiences, going deep into the experiences, and then trying to understand what is the thing that is hurting them more, and then trying to understand what do you avoid in your conversation, and then trying to understand if there is a learning on the way. So it's a whole graph that comes into the picture. This is how the dialogue session flows. And I tell you one thing, my personal experience, today's session, I tell you one thing. Try a dialogue. Try a dialoguing session with your colleagues. Probably next time again, I'm going to do it. Maybe on another topic, maybe on a sales topic like um, dealing with distributors or dealing with retailers. Maybe we can have an interesting dialogue on that. Make a structure around this question, structure around it. Things should work out. Yeah, so thank you so much. Today, I thought I'll be sharing with you this. This is one of my favorite topic, dialogue. And I'll tell you one thing to all of you who are here, this art, the art of dialoguing, probably is one of the best skills that one can have. You have this, your ability to control your team, your ability to take care of your team, your ability to influence your team, your ability to make your team accountable, your ability to make your team responsible, your ability to take your team through a challenge, your ability to give them immense targets, they all become easy and they become very, very purposeful interaction. The only thing that matters is you need to follow certain principles. You need to be aware of what you need to take care of while you're conversing. So, ladies and gentlemen, dialogue can help you solve problems. Dialogue can help you do many things. And dialogue can help you move from your current state to a desired state, which we are actually supporting people in the journey. So if you want to move from current state to desired state, and you want to really know more about your desired state, which can be a catalytic for achieving your goals, do reach out. We'll be more than happy to help you out. So thank you so much. Good talking to you today.